हेलो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अतुल ऑटो लिमिटेड की आज हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ऑटो रिक्शास इन डोमेस्टिक एंड द ओवरसीज मार्केट। अगर ग्लोबल बिजनेस के बारे में बात करें तो इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस इज अराउंड इन 27 प्लस कंट्रीज एंड हैज provided more than 10 revolutionary models. When we talk about the business segments, as per the recent updates on the screener.in, the company has major revenue coming from the auto vehicles sale, which is 92%, and company do offer small business services in the form of NBFCs. With this, the company has a market share of 5% in the domestic market and 3% in the overall market share in the three-wheeler industry. Interestingly, there are various brands being offered under this banner of Atul Auto Limited. The company has fantastic global as well as domestic presence, and the geographical revenue bifurcation is 91% of the revenue is from the domestic, that is the Indian market. Now, why Atul Auto? So let's talk about the Q4 results, which recently get revealed, and therein there has been a 34% increase in the PAT, that is profit after tax, year on year basis. When we talk about other numbers, the net sales are up by 24% in the March 2025. The net profit up by 70% in March 2025 as compared to the March 2024 number. And with this, the EBITDA is super strong at 53% for March 2025. So let's get started and let's deep dive into the fundamentals and technicals of the company और समझते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ स्टैंड करती है। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है इस कंपनी में तो क्या टाइम रहना चाहिए हमारे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस का। इस वीडियो का उद्देश्य कहीं से भी किसी स्कीम या प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना नहीं है। इट्स फॉर द सेक ऑफ improvising your financial investing skills. So let's get started. When we talk about the profit and loss of the company, let's look to the sales number, the revenue the company has generated in last 5 years. 315, 513, and March 2025, the number are 723 CR. With this, the company is maintaining an operating profit of about, I can say 40, 50 levels, that is 50 crore level, 36 crore in March 2023, March 2024, 40, and March 2025, 52. जी हाँ, अभी तक हमने काफी सारी बिग फोर्स एंड आई कैन से लार्ज लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज की स्टडी करी है, बट ये कंपनी काफी छोटी है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट let's deep dive into certain numbers which are super impressive. The company is maintaining a net profit of around 18 CR for March 2025. The company's EPS has been shifted from a negative EPS to a positive EPS in last 2 years. When we talk about the balance sheet of the company, in the balance sheet, the equity is stronger day by day क्योंकि मार्च 2023 के अगर आप रिजर्व्स के नंबर देखें, कंपेयर करें उसको मार्च 2024 एंड 25 से, they are significantly improving. With this, the company is little aggressive and leverage. Financial risk is on the higher side, and that's why आप देखेंगे कि मार्च 22 में सबसे हाईएस्ट कंपनी का बोरोइंग था और over a period of time it is reducing year on year basis, which is again a good sign. When we talk about the assets of the company, assets are somewhere in the range of 250, 240, 250 on the lower side. And that's how the total of the assets and liabilities looks like. Let's talk about the cash flow statement of the company. The company has turned its 3 years of operating cash flows, which were negative, into the positive number. So the same as 33 CR as on date. With this, the company also do
a huge payout in cash flow from investing activities or in financing activities. And you can see this minus 45 is something the repayment of loan which the company has taken up. And with this, when we compare the various investors, the promoters holding is just 42%. But surprisingly, FIIs and DIIs are not holding any big portion. So who is the one who is having big faith in the company? That's the public. Public की shareholding यहाँ 56% है, and it is stable, showing the faith in the company. Now, when we compare Atul Auto with the peers, we find very clearly that the company is having a PE of 73 as compared to the market median PE of 29. So, the big question is why this PE is on the higher side. So, let's try to explore this. When we talk about the debt equity ratio, it's just 0.25 these days after the reconstruction, the restructuring of the debt equity in the last 3 years. However, the return on capital employed and return on equity as compared to market are on the similar side with Atul Auto. The company faced huge competition from Bajaj Auto as one of the tough player in the market. And when we talk about the book value, it's 159 and the current price is 488. Now, interestingly, when we look to the profit and loss statement, we find very clearly. So let's summarize what we discussed. We find very clearly that the profits are getting positive and now they are increasing year on year basis. Same with the net profits, but we want to see more growth in the company. When we talk about the 1 year CAGR of the stock, it is minus 13%. अगर return on capital employed, return on equity लोअर साइड पे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइसेस में आप कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस नहीं देख सकते हैं, ग्रोथ नहीं देख सकते हैं. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम with this financials and with this numbers, is it like there are any possibilities in the upcoming days that there would be change in the stock prices and the movement? And so to explore that, let's get into let's get into the understanding of Atul Auto Limited. All right. So जरा हम स्टॉक की मूवमेंट को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे समझते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ. स्टॉक ने करीब 724 के लेवल पर अपना ऑल टाइम हाई लगाया इन द ईयर 2024, and post that we can see the corrections in the stock prices. Almost 50% discount तक ये स्टॉक आया है in the month of 30th of April. But last 2 months, yes, we can see that there are some positive shift in the stock prices. समझना ये है कि कंपनी में कहाँ पर डिमांड जोन है और कहाँ पर सप्लाई दिख रहा है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड किसी भी स्टॉक के अंदर हमें किस समय एंट्री करनी होती है और कैसे एंट्री करनी होती है. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अगर हम गौर से स्टॉक चार्ट को देखें तो हम देखेंगे हर साल प्राइस या हर महीने यहाँ पर प्राइस बिग रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आ रही थी. मतलब सेलिंग प्रेशर जबरदस्त था. कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 4 to 6% की रेंज में ट्रेड करेगा, कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इतने पॉजिटिव नहीं होंगे, तो ये सेलिंग पक्की है. और आप देख सकते हैं कि रीसेंट न्यूज के बाद अप्रैल के Q4 FY 25-26 के रिजल्ट्स आने के बाद में एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें स्टॉक की प्राइसेस में दिखने मिला. बट ये तो हो गई आज की बात. जब हम बात करें करंट प्राइसेस की, हमारी कोई भी एनालिसिस करंट मार्केट प्राइस पर बेस नहीं होती है. हमारी एनालिसिस होती है उस पॉइंट पर बेस्ड की जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है स्टॉक की या पेंडिंग ऑर्डर्स है. अगर हम गौर से देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 बेस कैंडल है विच शोज वेरी क्लियरली कि यहाँ पर स्टॉक को लेकर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स आइडेंटिफाई हुए हैं. सो
Let's mark this area. ओके, मंथली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर आपको आज की तारीख में दिख रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक को हाई टाइम फ्रेम से स्कैन करेंगे तो आप पाएंगे कि क्वार्टरली डिमांड जोन भी यहीं कहीं कोइंसाइड कर रहा है, विच हैज बीन ऑलरेडी मार्क्ड हियर बाय मी। सो अगर हम देखें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर यहाँ पर डिमांड के ऑर्डर्स हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे लगभग ये कोइंसाइडिंग लेवल है। अब बहुत सारे तरीके से ट्रेड्स होती हैं। आई प्रेफर कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, हर हर दिन मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम्स को टच कर रहा है, then in that case it's always advisable to go for conservative trades, right? And with this we can see that अगर मैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर लोकेशन आइडेंटिफाई करती हूँ, मंथली लेवल पर इस स्टॉक का ट्रेंड देखती हूँ, सो द ट्रेंड इज रिफ्लेक्टेड हियर बाय द सिंपल मूविंग एवरेज 50, that's the green line. The trend is positive, is on the plus side, right? Trend is on up. तो मुझे मेरी एंट्री प्लान करनी है। हाउ आई प्लान द एंट्री एट द वीकली टाइम फ्रेम? इफ आई हैव टू टेक एन एंट्री एट द वीकली टाइम फ्रेम, मुझे प्रॉपर डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर आप इस लेवल को देखें जो कि कोइंसाइडिंग लेवल है, इस लेवल पर एंट्री बैठती है। स्टॉप लॉस कंपल्सरी है, तो स्टॉप लॉस हम 57 रुपीज का लगाएंगे। एंड टू बिगिन विथ, इट्स गुड टू set a target of at least 2:1. So if we go ahead with that, 57 is the stop loss. Stop loss के साथ में हम देखें तो यहाँ पर 112 का, या हम कहें कि 150 के आसपास का हम टारगेट रखते हैं इस स्टॉक के लिए, दैट इज 525 की प्राइस पे। जब ये स्टॉक इन लेवल्स पर आता है हम एंट्री लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर कोई भी ट्रेड सजेस्ट करने का ना इस वीडियो का उद्देश्य है, और ना ही वॉलेटाइल मार्केट में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अदर देन जब तक आप अपनी खुद की स्टडी या खुद की एनालिसिस नहीं करें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। So I believe that you got a complete understanding of this stock, that is Atul Auto Limited. Do comment in the comment box ki what is the big takeaway and what is the another video which you are looking forward for when it comes to the complete top down approach. And do subscribe the channel Pro Capitalist. As I mentioned that this week we are going to come up with 3 videos. So already we are done with 2, and the third one which is being expected here is the Neurons Lab Limited. So see you soon in the next video. Till that time, bye bye. Take care and do subscribe the channel Pro Capitalist.